Okay, dear students, I am going to share my screen. Okay, dear students, तो स्क्रैच मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले स्क्रैच कैसे ओपन करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पर क्या टाइप करना है, हमने scratch.mit.edu। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने स्क्रैच ओपन करना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ओके, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारा स्क्रैच एडिटर ओपन हो जाएगा। Okay, our project is loading now. ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंटरफेस के बारे में सारा डिस्कस किया था। एक दफा मैं थोड़ा सा 1 मिनट रिव्यू आपको मैं दे देता हूं। दिस इज अवर स्प्राइट। ओके, ये हमारा स्प्राइट है और ये एरिया जो है वाइट, दिस इज कॉल्ड स्टेज। दिस इज कॉल्ड स्टेज एंड these are called the tabs. On the left side we have different options over there. हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल्स। दीज आर कॉल्ड द टैब्स। जिस भी हम टैब को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हमें डिफरेंट यहाँ पर ब्लॉक्स नजर आएंगे। ओके, जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी टैब हम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हमें ब्लॉक्स नजर आएंगे। देन दीज आर द स्क्रिप्टिंग ब्लॉक्स। सो ये स्क्रिप्टिंग ब्लॉक हैं, इनको हमने अप्लाई करना है अपने इस स्प्राइट के ऊपर। वो कहां पर अप्लाई करेंगे, वो ये एरिया है, ये जो सेंटर वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग एरिया और द प्रोग्रामिंग एरिया। ओके, तो लास्ट टाइम हमने अपने स्प्राइट को रैंडम ग्लाइड करवाया था अपने स्टेज के ऊपर। आज हम अपने स्प्राइट को अपने माउस, अपने कीबोर्ड के साथ, एरो कीज के साथ कंट्रोल करना सीखेंगे कि अपने एरो कीज के साथ अपने स्प्राइट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू मूव टू द इवेंट्स। ओके, अब आपने गौर से देखना है बेटा, ये पहले आप यहाँ पर मुझे आपने देखना है यहाँ पर मैं क्या कौन से स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। देन आई विल गिव यू 1 or 2 minutes to perform these steps. Okay, so first of all we will click on the events. Then we have the second option over here, when space key pressed. I'll pick this one. अब ये एक इवेंट है, यानी कि जब मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो फिर इसके नीचे जो भी हम ब्लॉक्स रखेंगे वो सारे स्पेस की प्रेस करने पर एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं अपनी अप एरो की प्रेस करूं तो मेरा स्प्राइट अप साइड को मूव करे, मेरा स्प्राइट जो है वो अप साइड टॉप की तरफ मूव करे। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देयर इज अ स्मॉल बटन ऑन दिस इवेंट। ठीक है, आप गौर से देख सकते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन, आई विल गेट द डिफरेंट ऑप्शंस, अप एरो, डाउन एरो,
right arrow, left arrow, and a lot of other options as well. But I want to use the up arrow. Okay, so I'll click on the up arrow. अब यहां पर ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया व्हेन अप एरो की प्रेस्ड, ये इवेंट कन्वर्ट हो गया अप एरो की के लिए। अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं अपने स्प्राइट को टॉप की तरफ मूव करना चाहता हूं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोजीशंस ऑन अवर स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो हमारा यहाँ पर जो स्प्राइट ये सेंटर पोजीशन में है। नाउ look at this. So there are few options over there. So x, there is the x that is equals to 0, and there is a y that is equals to 0 as well. So x indicates the horizontal positions on the stage. X indicates the horizontal positions on the stage, and y represents the vertical positions on the stage. So 0 0 means at the center of the stage. So x0, y0 means both 0 0 represents the center of the stage. Okay, so if I change x over here, let's say if I say 100, if I say x to 100, so let's see what happens. अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारा स्प्राइट राइट साइड को मूव कर रहा है। ओके, and if I put -100, so that will move to the left. Okay, so x represents the horizontal position on the stage and y represents the vertical. So let's say if I change the y, if I increase or if I put the positive value in y, so let's see what happens. So our sprite moves upwards, and if we put the negative value, if we put the negative value in y, our sprite will move downwards. So 0 0 is the center point. If we put the positive value in x, that will move towards the right, and if we put the negative value in x, that will move towards left. Okay, and positive value in y represents that the sprite will move upwards, and negative value in y, that represents that the sprite will move downwards. Okay, so now we will perform, we have understand the x and y. Now we'll do the same thing. So what we have to do now, when I press the up arrow key, so sprite should move upwards. Okay, so that means we have to increase our y. So the y is at the moment it's 0. So when I press the up arrow key, the y should increase. When I press the up arrow key, y should increase. So how we can put that block over here? We have to go to motion. Okay, we have to go to motion, and we have to select a block over here, and we will say what we have to change. We have to change our y because it will move upwards. So we'll put the change y by block. This is the block over here. Motion में हमारे पास block है change y by. We will pick and put it over here. Change y by 10. So that will increase the value of y by 10. So now I'm going to press the up arrow key, and you have to notice the action of the sprite. So I have pressed once. Now you can see the y value has been changed from 0 to 10. When I press the up arrow key again, it's now 20. Press again, it's 30. I'm pressing and my sprite is moving upwards. Got it? Okay, so this is pretty simple. Now it's your turn. It's your turn now. Please perform these steps. You have to put the when space key pressed from the events. Now come on,
now perform with my strong instructions. Hit this block when space key pressed, and you have to change it to up arrow key. You have to click over here and change it to up arrow key. यहाँ पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, इसको up arrow key के लिए select कर लेंगे. Okay. Next, what you have to do, go to motion and scroll it down from here. Okay. You will get the block change Y by. This is the block over here. Pick this block and put it over here. And now you simply click on the up arrow key and it will work. So if you are facing any problem, you can ask me in the chat box. If you have done, so please, if you have done with it, please say in the chat box. Okay जी, उस्मान गनी is asking for, so आपने वर्क लैपटॉप या कंप्यूटर पे करना है. आपने कल का लेक्चर नहीं लिया था, लेकिन मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी. आपको ये लेक्चर लेने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए. ओके, so done, I have done. Can you tell again? Okay, I say stage selected, no motion blocks. It says stage selected. Okay. So sir, please wait. Your voice too slow. I have increased the voice now, so you can check. वो है but site या कौन सा है? Okay. So ये site है यहाँ पर scratch.mit.edu. scratch.mit.edu. ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे. उसके बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो वहां पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा टॉप पर. उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा. ओके, तो जी किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें यहाँ पर? सो आई एम गोइंग टू enable you to talk. अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो वो बात कर सकता है. जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसने डन कर लिया है, वो बात नहीं करेगा. यस, प्लीज, if anyone has a problem, he or she can talk. वो इनेबल कर सकता है अपना माइक. सर अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, ये कल तक जो आपने लेक्चर दिया था वो तो समझ आ गया था स्केच में जाकर क्रिएट में. आज ये आप मोशन में गए हैं और इसके बाद ये कौन सी ऐप आपने ओपन की है? जी, ऐप तो वही है ना. देखें मोशन में, लेकिन मोशन से पहले ये जो ऑप्शंस जी इवेंट में हमारे पास व्हेन स्पेस की प्रेस्ड. अच्छा जी, ठीक है, ये ब्लॉक है. इवेंट में जाएंगे. ठीक है सर. ठीक है, और यहाँ पर जब स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अप एरो की, डाउन एरो की, कुछ भी कोई भी ऑप्शन. इसको पुट करके ओके. प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज. जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम आगे चलें. सॉरी,
Okay. अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, walaikum salam. सर ये मैं थोड़ा लेट आया हूँ तो मुझे बता दें ये व्हेन अप एरो की प्रेस्ड, तो ये जी। मेरी इवेंट्स में ये ऑप्शन नहीं आ रही। ये देखें बेटा, आप मेरा स्क्रीन आप देख सकते हैं ना, ये जी। ब्लॉक है व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। यस यस। ठीक है, आप जब इसको ब्लॉक को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, छोटा सा बटन है ना, तो आपके पास ओके सारे ठीक ऑप्शंस है आ जाएंगे। ठीक ठीक है। है, यू विल गेट थैंक ऑल द ऑप्शंस। यू। ओके थैंक यू। Okay, please mute your mic. Okay ji, now we are moving forward. Okay. Okay, now what we have to do now, next thing is we have to move it downwards. हमने अप एरो की के जरिए हमने अपने स्प्राइट को अप मूव किया। अब हमने क्या करना है, अपने स्प्राइट को डाउन एरो की से डाउनवर्ड्स मूव करना है, और ये बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? सिंपल, यहां पर जाएंगे, इस माउस किसके ऊपर लेके जाएंगे, ब्लॉक के ऊपर। जस्ट पहले आप अंडरस्टैंड करें, इसको देखेंगे, देन जब मैं आपको कहूंगा फिर आपने स्टेप परफॉर्म करना है। ओके, यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा। व्हेन आई विल राइट क्लिक, आई विल गेट 3 ऑप्शंस: डुप्लीकेट, ऐड कमेंट एंड डिलीट ब्लॉक। Okay, so I'll just simply click on the duplicate and I'll get a duplicate over here. So I'll put it over here. Okay, so now what we have to do is we have to just change it to down arrow key. We'll say down arrow. Okay, अगर हमने यहाँ पर सिर्फ डाउन एरो की किया है, लेकिन अगर अब मैं अगर सिर्फ डाउन एरो की प्रेस करूं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इट मूव्स अपवर्ड्स। तो अब हमें क्या करना होगा? वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, यहां पर हम करेंगे माइनस, प्रेस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 10। यानी कि जब हम डाउन एरो की प्रेस करें तो y की वैल्यू क्या हो, -10 होती जाए ऑटोमेटिक। ओके, नाउ व्हेन आई प्रेस द डाउन एरो की, my sprite will move downwards. When I press the up arrow key, my sprite will move upwards. Now come on, it's your turn now. Just duplicate that block, right click on that one, and then duplicate. And when you click on the duplicate, just move it aside and then just change it to down arrow key and change y by -10. You have to put the minus over here. Yes, come on. When you have done, so chat, tell me in the chat box. ओके जी, ये किस तरह करना है, एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। someone is asking for help again. Okay, what we'll do is simply right click on it and then we'll select the duplicate and we'll put it over here. Okay, next what we have to do, we'll click on this button and we have to say down arrow. Okay, now we have to put the negative value over here. We'll say minus and then 10 over. So when we press the down arrow key, our so the block change y by -10 will be executed. Now when I press the down arrow key, it moves towards downwards, and when I press the up arrow key, it moves towards upwards. So Arifa, what is your question? I have to. Okay, when you have done, please tell me in the chat box. Okay, Arifa, please, you can unmute yourself and ask me if you have any problem.
सर यस, सर मेरे मोशन ब्लॉक्स नहीं आ रहे। मोशन ब्लॉक्स नहीं आ रहे। अच्छा, आपने बेटा प्लीज, और कोई भी अनम्यूट ना करे माइक प्लीज। अच्छा बेटा, आप ये देखें कि आपने कैट स्प्राइट पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, मेरा माउस देख सकते हैं आप, इसको क्लिक किया हुआ है Yes. आपने, ये सिलेक्टेड है आपका। कौन सा सर मोशन? नहीं बेटा, मेरा माउस आप देख सकते हैं ना, मेरा माउस कहाँ पर है इस टाइम, मेरे माउस को फॉलो करें जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बेटा आ जाएगा। ये देखें मेरा माउस कहाँ पर है जी। नो क्लिक ऑन द, सर हाँ जी देखें अब हो गया। सर ट्राई कर। यस सर आ गए। आ गए, ओके गुड गुड। चले म्यूट कर लेते हैं माइक को। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, इसमें एक पॉइंट अब देख लें, अगर मैंने कहीं और क्लिक कर दिया, फिर लेट्स से अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ या कहीं और मैंने क्लिक किया हुआ है, तो मेरे यहाँ से ब्लॉक्स जो है मेरे प्रॉपर मुझे नजर नहीं आएंगे। ओके, सो आई हैव टू क्लिक, इट मस्ट बी क्लिक्ड ओवर हियर, यहाँ पर स्प्राइट के ऊपर होना चाहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज म्यूट कर दीजिए अपना माइक। सर ये ना जब मैं ना ऊपर नीचे करती हूँ ना, फिर क्या कहते हैं लेफ्ट राइट चलने शुरू हो जाती है। लेफ्ट राइट चलना शुरू हो जाती है। ओ, ये आपने ब्लॉक बेटा गलत यूज किया है, आपने चेंज एक्स बाय कर लिया है, आपने करना है चेंज वाई बाय। चेक करें आपने क्या लिखा हुआ है, कौन सा ब्लॉक यूज किया है आपने। सर यही किया था। नहीं, चेंज, चेंज एक्स बाय आपने किया है या वाई बाय किया है। जी आपने मूव किया हुआ है, आपने यस मूव नहीं करना ना बेटा, चेंज वाई बाय। देखें आप कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, आप स्क्रीन पर देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मोशन पे जाएंगे, देन स्क्रॉल करेंगे। आपने ये वाला ब्लॉक यूज नहीं करना, ये नहीं, कौन सा करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। यू हैव द ब्लॉक दिस वन, चेंज वाई बाय, यू हैव टू पुट दिस वन, ये वाला ब्लॉक आपने रखना है बेटा। थैंक यू सर। Okay, please mute yourself. Okay, now we are moving forward. Now next we have to now move our sprite left and right. We have to move our sprite left and right. We have to repeat the same steps. There will be little difference over there. Okay, so I'm going to pick this block again. When space key pressed, ये पिक किया मैंने और मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं अपने लेफ्ट सॉरी राइट एरो की को यूज करना। आई वांट टू यूज राइट एरो की, सो आई विल क्लिक द राइट एरो। अब जब मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो क्या हो, एक्स वैल्यू। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आपकी जो से ब्लू एरो है ये शो नहीं हो रहे, शो नहीं हो रहे। ब्लू सर the sprite not moving. ब्लू ब्लॉक नहीं एरो, ये sprite नहीं मूव। ब्लू ब्लॉक शो नहीं हो रहे। आवाज बेटा आप सर अपनी तरफ से यहाँ पर देखिएगा जरा, मेरे पास वॉल्यूम फुल है, चेक कीजिए। समझ नहीं आपकी, आपने इंटरनेट को जरा कनेक्शन देखिएगा मेरे पास। और किसी को प्रॉब्लम है आवाज की, साउंड की? नो सर। ओके, सर ये आपके ब्लू ये जो ब्लॉक है ये शो नहीं हो रहे। No, sir. No problem in voice. ओके। सर सर क्या हमें ये जो ब्लॉक्स हैं आप लगवा रहे हैं, ये हमें याद रखना होगा, ये ब्लॉक्स हैं? हाँ जी, थोड़ा बेटा आपको याद रखना होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप बार बार चीजें वो करेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स।
प्लीज ये बेटा ड्रॉ नहीं करें कोई भी, डोंट यूज द व्हाइट बोर्ड. Okay, so next what we have to do, we have to now we have to move who is drawing over there, please. Okay. Now what we have to do, we have to move our sprite towards right. And for that, we have to change our x by positive value. We'll put It is the, not moving. please mute yourselves, please. Sir, Okay, so what we have to do, we have to put the change x by 10. Change x by 10 block over here. Yes, Heather. So I'm going to unmute you. Yes. Excuse me, sir. It is not showing your screen on my device. So is there the same problem with anyone? It is only showing your camera. क्या किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में मुझे जरा बताइए प्लीज. Sir, somebody said I also Osman Ghani. Okay. So I'm going to stop my share and sharing my screen again. Okay, let's see. Okay. So have you got my screen now? Yes. Okay. Good. So I'm going to repeat the steps. So I'm going to move it, put it back. So now I have to move my sprite towards the right by using the right arrow key. So what I have to do, I have to repeat the same steps, but there will be little difference over there. I'll put the same block when space key pressed, and I'll select the option right arrow. Okay, now if we have to move it towards the left or right, so we have to change x now. So we have to change x. If we have to move it towards the right, we'll scroll down and you'll get the option change x by. We'll put it over here. So when I press the left arrow, or sorry, right arrow, so it will move towards the right. So to move it towards the left, I just duplicate this one and put it over here. And now I'll just change the option to the left arrow, and then I put the negative value over here. Okay. So now my sprite will move on the stage left and right, up and down. Okay, so it's your turn now. Please complete these steps. Come on. And when you have done,
tell me in the chat box. If you have any problem, you can raise your hand. Yes, someone is asking where is the when left arrow key. So Heather. So when left arrow key pressed, you have to pick the same block. Which block? Go to the events and Sir, I found it. I could not find it. I found it. okay, good. Sprite not moved. Waliur Rahman. Okay, Waliur Rahman. Waliur Rahman, I am going to allow you to talk. Okay. Okay, please, Waliur Rahman. जी आप बात कर सकते हैं। वलीउर रहमान अपने आप को अनम्यूट कीजिए। The sprite is not moving. Yes, Hamza. Hamza, please unmute yourself. Yes, sir. Yes. What's the problem? Sir, sprite नहीं move रहा. Sprite नहीं move हो रहा. Okay. I'm going to allow you to share your screen. Okay, you have to share your. So, कौन-कौन से blocks put किए हैं आपने? मुझे बताएंगे आप क्या किए आपने? Yes. बेटा कौन से blocks आपने put किए हैं? Sir, when right arrow key pressed, charged by 10, or when right arrow key pressed, Okay. charged by 10, or when left arrow key pressed, charged by 10, or Okay. when up arrow key pressed, charged by 10. Okay. आप ऐसे करें, अपना जो है अपनी स्क्रीन शेयर करें आप। मैं आपको अलाउ कर दिया मैंने। Screen share करें। 3 minutes left. Yes, 3 minutes left only. Come on. जी इसको बेटा फुल स्क्रीन करें ना, पहले तो मैक्सिमाइज करें अपने आपको। मैक्सिमाइज योर ब्राउजर। ओके नाउ इसके ऊपर क्लिक तो करें ना, अपने ब्राउजर के ऊपर क्लिक करेंगे पहले। यस क्लिक। Where is browser? ये ब्राउजर, ये इसी स्क्रीन के ऊपर आप सिर्फ स्प्राइट के ऊपर क्लिक करें आप। ठीक है, अपने स्प्राइट के ऊपर क्लिक करें। स्प्राइट कहाँ है आपका? स्प्राइट। ओके नाउ अब आप एरो कीज यूज करें। एरो कीज कहाँ है आपकी? कीबोर्ड से बेटा, कीबोर्ड से। कीबोर्ड पे एरो कीज होती हैं। लेफ्ट राइट एरो कीज, अप डाउन। बेटा आपका ब्लॉक्स जो हैं सारे बिल्कुल सही हैं। आप कीबोर्ड को यूज करें ना, कीबोर्ड की लेफ्ट राइट अप डाउन एरो कीज यूज करेंगे तो ये होगा। हो रहा है? सर लेकिन हाँ जी, लेकिन आपने क्या किया है सब में? आपने सब में
आपके ब्लॉक्स गलत पुट किए हुए हैं। आपने क्या किया है, अब राइट एरो में भी y को चेंज कर रहे हैं। तो जब राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये ऊपर को जाएगा। आपने क्या कौन सा ब्लॉक पुट करना है यहाँ पर, चेंज x बाय। ये ब्लॉक गलत है आपका, इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। इसी तरीके से आपने राइट एरो की 2 दफा पुट किए हुए, इनको रिमूव चेंज करें, एक को लेफ्ट कर दें, एक को राइट कर दें। आपने 2 दफा पुट किए हुए हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको देख के आप इसको परफॉर्म करें, हो जाएगा। ओके 1 minute left. ओके जी। प्लीज स्टॉप योर शेयर। Okay, dear students, our class is going to end now. आज आपने सीखा कि अपने स्प्राइट को हम लेफ्ट राइट अप डाउन मूव किस तरह कर सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम। आपने इन ब्लॉक्स को प्रैक्टिस करना है। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस तो होगा ही, लेकिन कल आपने जो असाइनमेंट दी प्लीज म्यूट कर लें अपने माइक्स को, प्लीज म्यूट कर लें। जी जी बेटा, आप बात कर रहे थे, आरिफा आप बात कर रहे थे। सर मैं कह रही थी, वो आपने कल जो असाइनमेंट दी थी घर के लिए वो बनाई थी, लेकिन फिर